In this video, we will learn to construct angles of 90 degrees and 45 degrees. Let us first talk about construction of 90 degrees. To do so, very first step is to draw a line segment of any length and name it AB. अब second step है to open your compass. मैंने यहाँ approximately lengthly 2 cm long. And considering A as a center, अब आप ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल लाइक दिस. अब जहां आपका सेमी सर्कल इस लाइन सेगमेंट AB को टच करे, इस पॉइंट पर आप अपने कंपास का पॉइंटर प्लेस करेंगे एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंथ ऑफ कंपास. मीन्स आपको सेम गैप यूज करते हुए यहाँ इस पॉइंट से एक 60 डिग्रीज की आर्क लगानी है. दिस इज द आर्क ऑफ 60 डिग्रीज. अब इस आर्क पर पॉइंटर फिक्स करते हुए आप एक और आर्क लगाएंगे ऑफ द सेम लेंथ, सेम गैप, जो कि है 120 डिग्रीज एंगल की आर्क. वी नो दैट 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री and whole divided by 2, 180 degree by 2 gives you 90 degrees. In the next step, using the same length of compass, 60 degrees की आर्क पर अपना पॉइंटर रखकर ऊपर की तरफ आर्क लगाएं. In the same way, अब अपना पॉइंटर फिक्स करेंगे 120 डिग्रीज एंगल वाली आर्क पर और ऊपर की तरफ आपने दूसरी आर्क लगाई. Now wherever both the arcs intersect each other, that is the new point obtained, which you have to join with point A. And this is your ray, and you can name it AC. So this is the construction of angle 90 degrees. Now using protector you can cross check the measurement. मैंने इस protector को यहाँ place किया on the initial line segment AB, and you can see this is exact 90 degrees. Now the next angle we are going to learn is construction of angle 45 degrees. 45 degrees is basically the half of 90 degrees. It means in order to construct angle 45 degrees, आपका पहला स्टेप यही है कि आपको 90 degrees का एंगल बनाना है as discussed earlier. After that, using the same length of compass, this you have to take care of that आप compass की length बिल्कुल same लेंगे जो आपने पहले use किया था construction of 90 degrees में. I considered it 2 earlier, so again I will open it 2 cm long. Firstly, you will highlight these points. Let's call it D. D indicate करता है यहाँ पर 0 degrees को. जहाँ पर आपका सेमी सर्कल इस रे AC को टच करता है, you can name it E. And point E marks the angle 90 degrees. Now you have to use both the points D and E with the same length of compass. One time you keep your pointer at D and draw an arc. Similarly, with the same gap, now place your pointer at E and draw another arc. So wherever both the arcs cut each other, intersect each other, that is your new point obtained. Just highlight it and join it with A. This is the ray. You can name it AX. And clearly you can see your full angle 90 degree is now divided into 2 equal parts, where the measure of each part is 45 degrees. Using protector we can cross check the measurement of this angle 45 degrees. तो protector को मैंने अपनी initial line segment AB पे place किया like this, and clearly you can see this ray AX, it represents the half of 40 and 50, और 40 और 50 का half होता है 45 degrees, means this is your correct angle. So in this video we have covered both construction of 90 degrees and 45 degrees. Thank you.